So जैसे अगर मुझे r का डेरिवेटिव निकालना है with respect to some third variable t, so what I'll do, r derivative, since r is a function of xyz, since r was the function of xyz, so what I'll do, I'll find the derivative with respect to x, then I'll find the derivative of x with respect to t. So this is something of this sort. So this is f, x is a function of t, y is a function of t, z is a function of t. So again, derivative of r with respect to y, then derivative of y with respect to t, then derivative of r with respect to z, and derivative of z with respect to t. So whatever rules in differentiation were applicable in simple calculus, right, same rules will be available here, right? Similarly, you can have the second order derivative, right? So if you have del square r by del x square, so this is nothing but the double derivative, right? If you have the mixed derivative, so you see this is nothing but first derivative of r with respect to x, and then the derivative of r, this whole with respect to y. And similarly, since you know in ordinary calculus, right, these two quantities are interchangeable. The del x by del y is same as del f del y. So these second order partial derivatives, they should be constant. And finally, total derivative of r, right? Total derivative of vector r is what? Del r by del x into dx plus del r by del y into dy and del r by del z into dz. So whatever rules for calculus were applicable, because now we are just associating the what do you call it as direction. Otherwise, the function remains same, right? Same things are applicable here. Is it fine, bache, all of you? Girls, clear है? So you see questions here are very easy, right? Say you see function f vector is given, so sum into I cap, something into j cap, and some function into k cap. So we have to find del f by del x. So how will you find del f by del x? How will you find del f by del x? मैम जब हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करके कंपोनेंट्स so I need not do much in this. So if you see first function में x square आ रहा है, x square का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये बन जाएगा ऑलरेडी 2 पड़ा है तो 4xy minus this is 4x cube I cap. So just the derivative of, so again e raised to power xy, derivative with respect to x हो रहा है तो y will be constant. So this is e raised to power xy as such. अब chain rule लग जाएगा. What will be derivative of xy? What will be derivative of xy? Y. Right, then minus y is constant, so no change. Derivative of sin x is cos x j cap. And then again x square, derivative of x square is 2x, cos y is constant. अगर मुझे इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है तो del square f by del x square. Again one more derivative. So derivative now x's derivative is 1, so 4, this is 4y. Then again 12x square I cap. Then again e raised to power xy का derivative will be xy, एक और y आ जाएगा तो y square. Then derivative of cos x is minus sin x, तो plus हो जाएगा. So all whatever we have done in simple calculus, again derivative of x will be 1, so 2 cos y k cap. Beta clear है? Yes ma'am. अगेन अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई चाहिए तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लूंगी. डेल स्क्वायर मींस टोटल, ये भी हो जाएगा. सो इफ यू सी, अब हमने जो डेल एक्स बाय डेल वाई निकाला है, हमने जो डेल एफ बाय डेल एक्स निकाला है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लूंगी, सो डेल स्क्वायर ऑफ एफ डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, सो दिस विल बी नथिंग बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका? डेल एफ बाय डेल एक्स का. तो ये जो हमने ऊपर अभी डेरिवेटिव निकाला है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. सो नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो x इज कांस्टेंट, सो यू सी 4x, डेरिवेटिव ऑफ y विल बी 1. अब 4x क्यूब में y है नहीं, सो डेरिवेटिव विल बी 0. देन दिस विल बी, अब यहाँ पे e रेज टू पावर xy इनटू y है, सो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. सो फर्स्ट फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, देन y as such derivative of e raised to power xy is xy,
और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हो जाएगा y, तो y स्क्वायर आ गया माइनस अगेन now cos x is constant, so derivative of y is 1. बेटा क्लियर है? And derivative of cos y will be minus sin x. बेटा क्लियर है? Is it fine? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? No, ma'am. Right? इसी तरह दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका. Now let us move to this one. What is next question? If function again phi is given. So now here two functions are given. One function is phi. So you see this is not a constant function. This is not a constant function. Then f is also given. Show that del cube, del x square, del z, del phi, right, is this. At the point is this. तो पहले हम derivative लेंगे. Then we will do the, we will put the point. So first thing is I need to find del phi f with respect to del z. So if you see simple है, phi is also given to me, f is also given to me. तो जब मुझे phi f निकालना है, I will multiply both, yes or no? So what will be phi and f? What will be phi and f? So जब multiply करोगे, already x z है वहां पे, तो x square z square y square I cap minus x square y cube z j cap plus y cube z cube x k cap. बेटा is it fine? Yes, ma'am. अगर आप मल्टीप्लाई करना इसलिए इजी है बिकॉज इससे डेरिवेटिव जल्दी निकल जाएगा. अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते तो आप प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. सो आई विल नॉट डू द डिफरेंशिएशन, दिस यू नो नाउ. अगेन इफ a is given, b is given, then we have to find del square del x del y of a cross b. So पहले a given है, b given है, a cross b निकल जाएगा. Is it fine बच्चे? a cross b is nothing but this determinant I j k. Yes, a vector and this is b vector. So a cross b निकल गया and then उसका डेरिवेटिव ले लेंगे पहले with respect to y and फिर with respect to x. बच्चे is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think next example is also the same. So पहले with respect to y, so and then with respect to x, right? So you see these are all basic questions, right? So I think इसके exercise में भी same तरह की questions हैं. If you see question number 6, r vector is given. R vector is given, then we have to find the derivative of. तो ये कैसे करोगे? How will you do this question? How will you do this question? मैम पहले कर्ल r by कर्ल u निकालेंगे. Yes. ये सारे निकाल लेंगे. हाँ, ये सारी क्वांटिटीज निकाल लोगे. So कर्ल r by कर्ल u एक बार निकालते हैं, कितना बनेगा? So you see half a is constant. So derivative with respect to u का derivative with respect to u is 1 and v is constant. So v का derivative will be 0. But is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, u का derivative will be 0, v का derivative will be 1. Term by term करेंगे. So this is minus half j cap and last will be half u is u का जैसा derivative हो रहा है. This is v. Sorry, यहाँ plus आएगा because u के साथ derivative कर रहे हैं. So half v आ जाएगा k cap. Similarly, del r by del v कितना हो जाएगा बेटा? half a I cap. फिर क्या हो जाएगा? minus half j Minus cap. half. Very K good. cap. फिर क्या हो जाएगा? Half u k cap. Is it fine? Yes. अब हमें एक और Yes, चीज ma'am. चाहिए, हमें del square भी चाहिए. तो del square अगर आप लेते हो with respect to u, यहाँ पे u नहीं है तो derivative will become 0. यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे u नहीं है. So all the derivatives will become 0. Is it fine? Yes, ma'am. This is Ma'am. nothing but 0 vector. This is nothing but 0 vector. So I think the answer will be 0 because now you have to find del r, del u, scalar triple product, del r, del v, and del square r, del u square. So you see this is what a. So a is this dot b cross c.
सो बट वी नो जब ये वेक्टर ही जीरो बन गया, दिस इज अ जीरो वेक्टर, तो जब आप डिटर्मिनेंट लिखोगे डिटर्मिनेंट में एक रो पूरी जीरो आ जाएगी, और हमें पता है जब डिटर्मिनेंट की एक रो जीरो होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जीरो. सो यू सी दिस इज जीरो. अगेन जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे, तो एक कंपोनेंट पूरा ही जीरो हो गया, तो प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा. सो आंसर इज जीरो. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right. So what I'll do, I'll stop here. Right. How much time I have? So R is this vector, R is this vector, and A and B are constant vectors. Show that R and d square R by dt square are parallel. If so that if R and d square R by dt square are parallel, then m plus n is equal to 1 and m is equal to n. So I think what you can do is you can find the cross product of these two vectors. R given है, then d square R by dt square निकल जाएगा. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है. अब फिर आप क्या करोगे, आप r क्रॉस d square R by dt square निकाल लोगे. R cross d square R by dt square निकालोगे. So now this will be something of this determinant. So obviously then you can solve this determinant, right? Moment you will solve this determinant, it will turn out to be some vector. Is it fine? Yes, ma'am. अब वो क्या होगा, मुझे पता है कि क्रॉस, अब since vectors are parallel, so obviously their cross product should be zero. So अब यहाँ पे कुछ component आएगा I cap, यहाँ पे कुछ component आएगा J cap, यहाँ पे कुछ component आएगा K cap. So obviously the coefficients of I cap, coefficients of J cap and coefficients of K cap should be zero. तो जब आप equal to zero put करोगे उनको, तो I think यहाँ से ये condition बन जाएगी आपकी, दो equations बन जाएगी आपकी M और N. Yes, ma'am. Right? I'll solve this also. You just try with this method. I think it should work. Otherwise, I'll solve this and send. करना यही है आपने. Yes, R निकालना है, D yes, स्क्वायर हो जाएगा. है ना, और ये वेक्टर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, एक वेक्टर बन जाएगा. बट सिंस दिस वेक्टर इज जीरो, तो ईच ऑफ दिस कंपोनेंट विल बी जीरो. तो वहां से ये कंडीशंस निकल जाएंगी आप. Yes, ma'am. राइट? और बताओ. Ma'am,